क्या हो गया अगर मैंने कोडिंग निंजास का 6 मंथ डेटा एनालिटिक्स जॉब बूट कैंप ज्वाइन नहीं किया? जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम टू मिट्स ओडिया समस्त को आज सेशन को स्वागत आज हम 11th रो क्लास क्लास हमर टॉपिक किछ दिन हला YouTube क्लास रे चली थिला पुनी किछ दिन बंद हो जाइतिला टॉपिक होची हमर आयनिक इक्विलिब्रियम तो आयनिक इक्विलिब्रियम के बे हम भलो भाबरे देखिबा राजा राजा मो क्लास 12th रो सर मोर पुराना कोर्स ता आसुनी राजा राजा पचारचंदी सर मोर पुराना कोर्स ता आसुनी नुआ गोटे न्यू पेज आसुची ताकू कोर्स को अपडेट करो तुम आप को अपडेट करो सब ठीक है जीवो राजा राजा ठीक अछि ओके तो अन्य मानन को मु आशा कर समस्त शीघ्र शीघ्र जॉइन करंतु बहुत पिला जॉइन करना जॉइन करिया को मु अनुरोध करछि समस्त जॉइन करो क्लास रे प्लीज जॉइन द सेशन सुन आमे आयनिक इक्विलिब्रियम रे पढुथले कोन आयनिक इक्विलिब्रियम रे आमे पढुथले हमरो theories related to acid and base आपण काली YouTube करिवा को कहिथिले हां गतकाली हेई पार नथिला गतकाली मु एक्चुअली भूल रे कहि दिथिली जे आज हबार थिला किनु गतकाली भूल रे कहि दिथिली काली करी बोली ओके क्रिएटर सॉफ्टवेयर्स तो हमें देखिबा वर्तमान क्लास केमिकल रिवर्सिबल होची तुम्हारा कोन होची ना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए A+ और B- रे आ या रिलेटेड थ्योरी हम जो देखिबा आरएनएस थ्योरी ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी लुईस थ्योरी आरएनएस थ्योरी अनुसार जे H+ दबा से एसिड जे OH- दबा बेस ओ तुम्हें मते कॉल करि परिबो आशा करछि बहुत जण पाखरे नंबर अछि जस्ट वेरी गुड मॉर्निंग तो ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी अनुसार H+ होची तुमरो एसिड जे H+ एक्सेप्ट करे सी होची बेस कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस कथा जदि हम देखिबा जा को हाइड्रोलिसिस कला परे दीटा प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दिए ताको हम कहबा गोटे एसिड अनदर वन इज बेस सिंती लुईस थ्योरी अनुसार कोन कर परिबा लुईस थ्योरी अनुसार जे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे सी होची एसिड जे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे सी होची बेस आ लुईस एसिड हमर एग्जांपल रे आउरी बहुत सारा सिंपल केटायन अछि कॉपर 2+ Ag+ Ca2+ एटसेट्रा आ जहार सेंट्रल एटम रे ऑक्टेट रूल फिल अप हे नथिबो ऑक्टेट 8टा इलेक्ट्रॉन नथिबो से गुडा को ए सब गुडा को हम कोन करबा लुईस एसिड ठीक अछि तापरे जहार मल्टीपल बॉन्ड थिबो बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से गुडा को भी लाइक CO2 SO2 SO3 ए गुडा को होछि हमर लुईस एसिड सिमिलरली जो मॉलिक्यूल रो सेंट्रल एटम रे वेकेंट डी ऑर्बिटल थिबो लाइक SiCl4 SiF4 एटसेट्रा से गुडा को भी हम कोन कहू these are also known as Lewis acid आ सब गुडा एनायन आ सब गुडा को मॉलिक्यूल न्यूट्रल मॉलिक्यूल विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कोन कहबा बेस ठीक अछि सो ये थिला हमर टोटल कांसेप्ट रिलेटेड टू एसिड एंड बेस तापर लास्ट क्लास हम देखतिले आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस ओके वीक एसिड रो आयनाइजेशन देखतिले Ha+H2O gives rise to H3O+ plus A-. सो से अनुसार हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट आ तार रिलेटेड गोटे प्रॉब्लम भी करथिले राइट आ एठी हमर गोटे क्वेश्चन थिला बहुत दिन तळे से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करियो
से प्रश्न को वर्तमान सॉल्व करबा कोन हबो A weak monobasic acid has a dissociation constant equal to 1.6 into 10 to the power minus 5 at 25 degree Celsius. Luca 5 प्रणाम जसी भलो अछि मा तुमे केमते अछो so amaro dissociation constant alpha is equal to how much it is 1.6 into 10 to the power minus 5 and temperature अछि 25 degree Celsius. Calculate the degree of dissociation. Calculate the degree of dissociation. Sorry, alpha एठी पचरा हैछि. Alpha एठी पचरा हैछि. Dissociation constant माने Ka दिया हैछि. K is given as 1.6 into 10 to the power minus 5 and alpha हमको पचरा हैछि. Alpha केते जानिने हमें. आउ कोन करियर अछि ना concentration हमर दिया हैछि. Concentration is equal to 0.1 molar. So concentration अछि हमर 0.1 molar. आउ एठी हमरो गोटे मोनोबेसिक एसिड अछि. मोनोबेसिक एसिड रो अल्फा पई फार्मूला कोन अल्फा पई फार्मूला होची जते सब मोनोबेसिक एसिड रो फार्मूला होची अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ Ka by C. सो एटा को हम डायरेक्ट पुट करबा अल्फा इज इक्वल टू कोन हो रूट ओवर ऑफ Ka by C. आ मेडे एठे भाबी नेचे जे एटा कोन एटा गोटे वीक एसिड बोली कि भी हम भाबी नेचे स्ट्रांग नुह बोली कि भाबी नेचे इनिशियली जदी क्वेश्चन रे किछि न देथियो हम भाबियो जे एटा वीक एसिड. सुभाष इज गुड मॉर्निंग root over of K 1.6 into 10 to the power minus 5 divided root divided by C. C माने होची 0.1. तो याकू सॉल्व करले 1.6 रो रूट 1.6 रो रूट केते आसीबो एमते हम जानते 16 रो रूट होची आको हम एमदी लिख परिबा 16 multiplied by 10 to the power minus 6 ठीक अछि रो रूट ओवर ऑफ K by C ना हां तो एटा हिजबा हमर 1.16 multiplied by 10 to the power minus 6 16 multiplied by 10 to the power minus 6 right 16 multiplied by 10 to the power minus 6 हिजबो एटा ना एटा 1.6 multiplied by 10 to the power minus 6 कारण 10 to the power minus 1 टा जोडा 0.1 टा ऊपर पळेले 10 to the power minus 6 हिजबो बुझी होची 0.1 ऊपर को जेतले जिवो 10 to the power minus 6 हो सो 1.6 multiplied by 10 to the power minus 6 10 to the power minus 6 रो रूट जदि बाहर करबा एडा हो 10 to the power minus 3 कारण 10 to the power minus 3 रो स्क्वायर होची 10 to the power minus 6 ठीक अछि आ 1.6 रा हमें रूट बाहर करबा 1.6 रा रूट बाहर कले हमर केते आसीबो आंसर लेट मी चेक so root over of root over of so it is 1.2649 by 1.265 so it is coming as 1.265 right 1.6265 not 4 hobani eta 1.6 actually 1.6 ro root hochi 1.265 multiplied by 10 to the power minus 3 so alpha is 1.265 multiplied by 10 to the power minus 3 not 4 asibo nahi karan jodi eta question thanda 16 1.6 multiplied by 10 to the power minus 4 ताहले अलगा ही थांदा ठीक अछि तो एटा 1.265 into 10 to the power minus 3 क्लास केंजा होचे सर क्लास केंजा होचे सर राहुल पचारले सर क्लास केंजा होचे ए क्लास टा 11th क्लास रो राहुल महानदिया महांडिया इट इज 11th क्लास वर्तमान 11th रो जो पिला 12th को जाउछंती से मानकर हमर आयनिक इक्विलिब्रियम क्लास चालीची तो ए क्लास टा से मानन पाए ओके तो से अनुसार अल्फा रो वैल्यू एतिक आसीला ओके सरला हमर एठी क्वेश्चन तापर हम जिबा नेक्स्ट पार्ट को
तो आयनिक इक्विलिब्रियम एठी हमरो कवर अप हेगला सॉरी आयनिक इक्विलिब्रियम रो वीक एसिड रो कवर अप होला दैट टू मोनोबेसिक एसिड सिमिलरली हमें भी देखिबा डाइबेसिक एसिड रो हमें देखिबा बे अल्फा और ता रिलेटेड क्वेश्चन सो डाइबेसिक एसिड सो हमें डिस्कस करथले जे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ आयनाइजेशन ऑफ डाइबेसिक एसिड आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड थिला वीक एसिड ही हमें नउचे आयनाइजेशन ऑफ डाइबेसिक एसिड बेसिकली वीक रहिबो वीक नेले हमको कैलकुलेशन करिवारे इजी हबो सो आयनाइजेशन ऑफ डाइबेसिक एसिड रो गोटे एग्जांपल जदि हम देखिबा सेट जेमति Ha थिला एटा कोन H2O H2A H2O को हाइड्रोलिसिस कले इट विल अंडरगोस 2H plus A minus right सेटा जेमति H plus A minus हेतला एटा 2H plus A minus हबो ठीक अछि ताले इनिशियल कंसंट्रेशन नबा बे गोटे गोटे इनिशियल कंसंट्रेशन H2O रो इनिशियल कंसंट्रेशन H2O रो सपोज हमर केते मोल रहिछि इनिशियल कंसंट्रेशन रहिछि किछि बुझियोनी राहुल महांदिया इंग्लिश टा किछि भी बुझी पारनो राहुल एई चैप्टर टा एटा पूरा आरंभ रो पढिले बुझा पड़िबो तो H2O रो जदि हम देखिबा H2O रो कोन रहिछि H2O रो हमको जदि देखिबा इनिशियल कंसंट्रेशन हमर केते नैचे ना C नैचे लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन इज बी C और एटा 0 0 तो आफ्टर सम टाइम फाइनल कंसंट्रेशन केते होछि जेतु डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होछि हमर अल्फा ताले C अल्फा सरिबो C रु C अल्फा सरिबो ताले एपटे केते हबो ना एपटे 2C अल्फा फॉर्म हबो एपटे C अल्फा फॉर्म हबो सो 2C अल्फा इनटू C अल्फा ताले एटा कोन हबो एटा फर्दर हम जे देखिबा यार डिसोसिएशन कांस्टेंट K रो वैल्यू केते आसीबो ना डिसोसिएशन कांस्टेंट विल बी H plus रो स्क्वायर एटसेट्रा so you can find here that dissociation constant the expression for dissociation constant dissociation constant रो expression कौन हबो it will be Ka is equal to Ka will be equal to concentration of H plus the square into concentration of A minus divided by concentration of H2 okay H plus रो स्क्वायर रहइबो कारण लॉ ऑफ मास एक्शन अनुसार ए भले हबो H plus रो स्क्वायर जदि देखिबा it will be 2C alpha रो होल स्क्वायर multiplied by C alpha divided by H2O रो होल H2O रो वैल्यू होची C minus C alpha तो हमें K रे रहि जिबा ठीक अछि कारण हमें स्ट्रांग एसिड बा स्ट्रांग बेस स्ट्रांग एसिड हे पारे बा वीक एसिड भी हे पारे वीक एसिड पई हमें कंसीडर जदिच करूचे कि हमें स्ट्रांग रे इठी रहि जिबा ओके लेट अस कीप इट स्ट्रांग एसिड गुड मिनट ठीक अछि बुझा पड़ला जे हमर स्ट्रांग एसिड रे हम इठी रहिबा स्ट्रांग एसिड पई भी हे पारे वीक एसिड पई हे पारे so हमें further K रो वैल्यू केते आसीबो द एक्सप्रेशन फॉर K will become as K is equal to ऊपर के कोन रहिछि ना 2 रो स्क्वायर 4 into C alpha रो होल स्क्वायर multiplied by C alpha sorry C alpha not it is C alpha रो होल स्क्वायर C alpha रो होल स्क्वायर माने C square alpha square C alpha multiplied by C alpha बुझा पड़छि 2C alpha रो होल स्क्वायर माने केते होबो 4C square alpha square 4C square alpha square okay divided by C minus C alpha so C माने कॉमन बाहर करले 1 minus alpha ताले ऊपरटा केते जीवो ना 4 C square into C cube alpha square माने alpha cube divided by C into 1 minus alpha so C cube कटिगला C square so 4C square alpha cube divided by 1 minus alpha 4C square alpha cube divided by 1 minus alpha
बा आम इन कॉमन लिखिदे परिबा कौन ना इन कॉमन वी कैन राइट इट एज दैट दिस इज इक्वल टू 2c रो होल स्क्वायर then alpha cube divided by 1 minus alpha for dibasic acid for dibasic acid. Yes, Rahul, आपरे पूरा फास्ट रू पढ़ाबो डोंट वरी. ये हला डायबेसिक एसिड पई मु जदी बे एटा मोनोबेसिक एसिड गला डायबेसिक गला तापर हम जिबा ट्राइबेसिक एसिड फॉर ट्राइबेसिक एसिड. गुड मॉर्निंग शुभम केमते अछ फॉर ट्राइबेसिक एसिड. अच्छा फॉर ट्राइबेसिक एसिड कोन हबो ट्राइबेसिक एसिड रे सेम जिंस आसीबो जेतो हमें H3A हबो ताले 3H प्लस प्लस A माइनस. सिमिलरली एठी जदि हम देखिबा एठी हमरो C माइनस फाइनल कंसंट्रेशन C माइनस C अल्फा हबो फाइनल. आ एटा कोन हबो एटा हबो 3C अल्फा एटा हबो ओनली C अल्फा. तापरे K रो एक्सप्रेशन जब देखिबा K विल बी 3C alpha रो power whole cube then C alpha divided by C into C sorry C minus C alpha sorry then divided by C minus C alpha. So 3 रो cube माने कौन हो जो 3 3 की 9 3 की 27 into C रो power cube into alpha cube into C alpha divided by C into 1 minus alpha. एबे हमरे एबे हमें पूरा पाखापाखी एक्जाक्टली जिनसटा आसीबो. अच्छा 27 क्यूब माने हम लिख परिबा 3c रो होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय अल्फा टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा. तो ध्यान देकी देखो जेतोला हमरो कोन हितिला डाई मोनोबेसिक एसिड हितिला इट वाज 1 0 power 1 multiplied by alpha square divided by 1 minus alpha. It has zero tribasic acid. Similarly, for polybasic acid, it has कौन होबो? जेतोला हमें polybasic acid कथा डिस्कस करबा. So for polybasic acid, Rakesh Behra, very good morning. For polybasic acid ପାଇଁ कौन आसीबो polybasic acid ପାଇଁ जदि हम देखिबा it will be Ka is equal to it is Nc रो power n. What is n? N is known as its basicity. N is the basicity. Power n alpha to the power n plus 1 जते थिबो जहा थिबो ताटो गोटे अधिक हबो जेंदी 2 थिले 2 plus 1 3 3 थिले 3 plus 1 4 आउ 4 थिले 4 plus 1 5 हबो divided by 1 minus alpha. So हम जदी याठी एठी हम जदी n जगह रे 1 पुट करिबा ताले एटा आसीबो ना c to the power 1 multiplied by alpha square. So हमरो for monobasic acid. So this is the direct formula जोटा कि हमरो इथे derive कले. ठीक अछि जोटा that is derived from your method of induction जोटा 11th class रे पढिचो induction method रे हम एभला derive कले the expression for K for a polybasic acid. What is n? N is equal to your basicity where n is equal to basicity of the acid रो basicity बुझी होला एटा हमरो different equation ପାଇଁ कोन रहइबो expression. तापर हम जिबा relative strength of weak base बा weak base कथा जदि हम देखिबा weak base and accordingly weak base रो तार से बोला degree of dissociation हमें कैलकुलेट करबा weak base रो पुनी उथरे degree of dissociation पुनी तार हम जदि बाहर करबा how alpha is related to your kb weak माने expression. This is your ionization constant. So let's give a heading that is your हमर एठी acid हितिला ionization of weak acid. Let's move for ionization of weak base. So it is your ionization of weak base. तार ionization ऊपर डिस्कस करबा.
ये भी सेम बहुत इजी रही वीक बेस। तो आम वीक बेस प्रथम आम देखा मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस माने ओब्वियसली सेठी कौन थी मोनो एसिडिक बेस रे ना गोटे ही एसिडिक पार्ट थी गोटे ही OH माइनस पार्ट थी एसिडिक पार्ट इन OH माइनस पार्ट। So example जदि हम देखिबा, let's consider an example that is BOH gives rise to B plus plus OH minus. So this is an example of monoacidic base. एटा होची कोन गोटे monoacidic base। monoacidic base केमति जानिलो, कारण हमर गोटे OH minus देला। initial concentration हमर केते रहइबो, initially BOH ର concentration होची, let's it should be C mole liter inverse, और ये initially form होता सो 0 0 रहिबो। then after final किछ समय परे कोन हबो ना final concentration, C minus C alpha हबो, राइट। आ एठी हमर कोन हबो C alpha, एठी भी C alpha। बुझा पड़छ, एगुडा सब बुझीची। से अनुसार जदि हम देखिबा ना आयनाइजेशन कांस्टेंट, दैट इज आयनाइजेशन कांस्टेंट बा हम ताको कहू सेडी जेमति कोन थिला हमर, सेडी जेमति हमर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थिला, एटा भी हम आको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही कहू बा dissociation constant। ठीक अछि, we can also call it as dissociation constant। जेहेतु सेटा एसिड पई हितिला तेनु हमें A लेटर यूज करथले, जेहेतु एटा बेस पई होची तेनु एटा हमें B यूज करबा। Kb means dissociation constant has the expression given by concentration of B plus minus B plus ion multiplied by concentration of OH minus ion divided by concentration of BOH। all these are final concentration। B plus ର concentration केते अछि ना C alpha, यार C alpha multiplied by C alpha divided by this is one is C minus C alpha बा C into 1 minus alpha। so C को C cancel out हे जिवो, ताले एटा कोन हे जिवो ना C alpha square divided by 1 minus alpha। ठीक अछि, C alpha square divided by 1 minus alpha। what is alpha? Alpha is your degree of dissociation for weak base weak monoacidic base। weak base ପାଇଁ like तुमरा एग्जांपल जदि हम देखिबा, weak base ର एग्जांपल होची NH4OH। एग्जांपल देखिबा NH4OH। for weak base like NH4OH ପାଇଁ जदि हम देखिबा, it should be how much ना it should be alpha is always less than 1। so 1 minus alpha is nearly equal to 1। ताले हमें सेठी कोन लिख परिबा that Kb is equal to C alpha square divided by 1 और alpha square is equal to Kb by C and then alpha is equal to root over of Kb by C। root over of Kb by C। गोटे बेस एसिड केमती जानिबो एटा स्ट्रांग कि वीक। स्ट्रांग कि वीक जानिबा पई म आस्तिबा आगु को ताको नै कि तमरो क्वेश्चन को सॉल्व करिया पई मु थ्योरी नै कि आस्ति जे कोडा एसिड को एसिड ता स्ट्रांग को एसिड ता वीक केमती जानिबो ताको रिलेट करी कि थ्योरी एबे पढिया जाउछि। ये गला हमरो वीक बेस रे कोन ना सब गुडा को डिसोसिएट होबनी। वीक बेस रे जदि हम देखिबा अल्फा ऑलवेज लेस देन 1 केमती ना सब गुडा को डिसोसिएट होबनी, किछिटा डिसोसिएट होबा आ किछिटा रहि जिवो। similarly for dibasic acid, diacidic base
for diacetic base. शुभम पचार क्वेश्चन शुभम बुझी पारला शुभम तुम प्रश्नर उत्तर for diacetic base ऑर्गेनिक गुड़ाक वीक एसिड होता है यस अखिल for diacetic base डाइएसिडिक बेस कौन हम ना आम जब एग्जांपल नबा जे आम BOH होल ट्वाइस नबा लाइक COH होल ट्वाइस बा MgOH होल ट्वाइस ए भलिया तो ये कौन हम ना 2B प्लस प्लस सॉरी B प्लस प्लस 2OH माइनस so OH माइनस दीटा जीव और B प्लस गोटे फाइनल कंसंट्रेशन डायरेक्ट लिखुची फाइनल हम हमर C माइनस C अल्फा this one is C minus C alpha it have a C alpha it have a 2C alpha then according to your law of mass action that is the expression for Kb ionization constant or dissociation constant it should be concentration of B plus multiplied by concentration of OH minus square divided by concentration of BOH whole twice B plus रो वैल्यू होची C alpha ଆଉ OH minus रो होची 2C alpha रो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय BOH होल ट्वाइस रो वैल्यू आछी C minus C alpha BOH होल ट्वाइस ठीक अछि ताले एटा कोन बस C alpha multiplied by 4C square alpha square divided by C multiplied by 1 minus alpha then C will be cancelled out ताले हमें कोन पाइबा 4C square माने 2C रो होल स्क्वायर then it is alpha cube divided by 1 minus alpha. Similarly, polybasic acid, same jinsa. Poly for polyacidic base. Polyacidic base fine. Same jinsa arise habo. यार और ट्राई नोनी दुई रे काम खत्म कर दोची Kb is equal to कौन हबो ना Nc to the power n multiplied by alpha to the power n plus 1 divided by 1 minus alpha. What is n? N is equal to your acidity of base. Acidity माने कितना OH अछि बुझा पड़ला ना कार कोई डाउट रहला Is it clear to everyone or you have any doubt still? समस्त को बुझा पड़ला ना कार कोई डाउट रहला एबे हम जिबा सबटु इंपोर्टेंट पार्ट जे एसिड कोडा स्ट्रांग कोडा वीक केमिति जानिबो आपण तो ए सब बतौचंदी किनु हमको बुझा पड़ुनी जे कोडा स्ट्रांग कोडा वीक तेणु आपण को बे कहया को पड़िबो जे वीक एसिड कोडा आ स्ट्रांग एसिड कोडा वीक बेस कोडा आ स्ट्रांग बेस कोडा ए सब हमको कहया को पड़िबो पिला माने आसंता काली मॉर्निंग रे भी मो आथरे क्लास नेबे ठीक अछि मॉर्निंग ठीक एई समय रे एई टाइम रे हम आथरे भेटिबा आथरे क्लास नेबे So, हमें देखिबा जे factors affecting acidic strength and basic strength 1 minus alpha above yes 1 minus alpha right thank you Akhilo it should be 1 minus alpha right so next हम जिबा factors affecting acidic strength कौन से factor रही जो जोगो acidic strength ता effect हेता है so factors affecting acidic strength कौन फैक्टर जदि हम देखिबा हमर फैक्टर रही प्रथम फैक्टर होची हमर कोन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना प्रथम होची हमर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बा बॉन्ड एनर्जी ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ बोथ फाइन बॉन्ड एनर्जी ऑफ एसिड और बेस एसिड किमा बेस रा बॉन्ड एनर्जी प्रथम फैक्टर द्वितीय नंबर फैक्टर कौन द्वितीय नंबर फैक्टर होची तुमरो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द्वितीय नंबर फैक्टर होची इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एसिड ପାଇଁ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस ପାଇଁ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी then atomic or ionic size तो प्रथम देखिबा हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बा बॉन्ड एनर्जी ऑफ एसिड एंड बेस मन रख जिते बॉन्ड एनर्जी अधिक हम जिते बॉन्ड एनर्जी अधिक हम से कौन हम स्ट्रॉन्ग हम कोड़ा एसिड कि बेस जेमिति मन कहबी जे जेते जेते आमे क्लास करिवा बा जेते पाठ पढिबा सेते कोन हबा हमर पाठ पढा बा ता रिलेटेड कांसेप्ट सेते स्ट्रांग हबो सिमिलरली जेते मॉलिक्यूल रो बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिक रहबो सेते सी मोर स्ट्रांग रहबो सो जेते स्ट्रांग रहबो सेते सब गुडा माने मु कहबी बहुत स्ट्रांग थिबो सहजरे ब्रेक करिवनी जेते स्ट्रांग थिबो से कोन हबो सहजरे ब्रेक करिवनी नेक्स्ट आउ गोटे पॉइंट ऐड करिवार अछि पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड আজি शुभम पचारे सर आज केतेटा जाए क्लास करी आज 7 जाए पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड मोर दा अल्प दिन लगे आउ कह गले मो आमर आसंता शुक्रवार भितर ये चैप्टर को सारे ट्राई कर बुधवार गुरुवार शुक्रवार आज तो गला बुधवार गुरुवार शुक्रवार नहले आउ गोटे क्लास शनिवार रविवार आड़ को जीव बट यही रविवार भितर जमी चैप्टर को मु कवर करदेवी ठीक अच्छे मोर द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड जेते बॉन्ड रो स्ट्रेंथ अधिक हम ओ बाप रे मोर द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड हमको कौन दरकार ना एनर्जी बहुत दरकार मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड टू ब्रेक द बॉन्ड को ब्रेक करिया को अधिक एनर्जी दरकार जिते बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिक हबो हमको सेते अधिक एनर्जी दरकार बॉन्ड को ब्रेक करिया पई सो बॉन्ड को ब्रेक करिया पई हमको सेते अधिक एनर्जी दरकार पड़ियो जिते हमको कौन करिया ना जिते हमर स्ट्रेंथ अधिक हबो हमको सेते अधिक दरकार एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करिया पई बुझियला अच्छा बॉन्ड ब्रेक हला परे हमको कौन करिया पड़ियो फर्दर बॉन्ड सिना ब्रेक हेला हला हमर कोन समस्या हबो बा कोन फायदा हबो जेते बॉन्ड ब्रेक हबो जेते अधिका डिफिकल्ट हबो सेते हमको कोन हबो को जेते अधिका डिफिकल्ट हबो सेते H+ अधिका बाहरिबो ना सेते H+ कम बाहरिबो एसिड केस रे H+ अधिका बाहरिबो कि कम बाहरिबो सेते H+ अधिका बाहरिबो कि कम बाहरिबो जेते हमर बॉन्ड रो स्ट्रेंथ अधिका हबो कम बाहरिबो यस सो इन केस ऑफ acid less number of H plus will be less number of H plus will be released
Similarly, in case of base, less number of OH minus ions will be released. Less number of OH minus ion will be released. So acid रे H plus कम बाहरिबो, OH minus रे base कम बाहरिबो, right? ताले हमरा कोन हबो ना H plus जेहेतु हमरा कम रिलीज होची, H plus जेहेतु हमरा कम रिलीज होची, तेणु so in case of acids, so acidic strength or basic strength decreases. So the acid or base becomes weak. So the acid or base becomes weak. कौन पाई? For a strong bond, for a strong bond, for a high bond energy. So bond energy जिते अधिका हबो acidic strength सेते कम हबो. So आमे कहि परिबा जे acidic strength बा basic strength से अनुसार कोन हबो ना कम हबो. आ acidic strength basic strength जिते अधिका हबो बा कम हबो से अनुसार Ka value, Ka माने dissociation constant, K value सेते कोन हबो, K value will be सेते more. आ K value जिते अधिका हबो से अनुसार तार pK value सेते कम हबो. So pK value टा भी कहिबार थिला. What is pK? First मु कहि दिए. Let me define about pK. pK is equal to your negative logarithm of k. Negative logarithm of k को हमें कहिबा pK value, which we are going to use. pK value, negative logarithm of k. तो एबे जे बुझा पड़ला जे बॉन्ड एनर्जी जेते अधिका हबो, बॉन्ड एनर्जी जेते अधिका हबो एसिडिक स्ट्रेंथ सेते कोन हबो कम हबो. बॉन्ड एनर्जी जेते अधिका हबो एसिडिक स्ट्रेंथ सेते कम हबो. आ पीके बोली के हम नुआ गोटे टर्म डिफाइन करछे व्हिच इज इक्वल टू योर नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के. के माने समस्त जानछो डिसोसिएशन कांस्टेंट. इन केस ऑफ बेस इट शुड बी केबी. इन केस ऑफ बेस इट शुड बी केबी. सो पीकेबी लिखा जिवो माइनस लॉग केबी. ओके. अच्छा मु कहिबी जदि के वैल्यू अधिका हबो पीके वैल्यू कोन हबो. के वैल्यू जदि अधिका हबो पीके वैल्यू कोन हबो को. के वैल्यू जदि अधिका होची पीके वैल्यू कोन हबो. If k is more then pk will be less. तो आमे किछि एग्जांपल नै कि टिके ट्राई करिवा, राइट. किछि एग्जांपल नै कि बुझिवा. k वैल्यू pk वैल्यू. सपोज मु मनर कहूची k रो वैल्यू होची 1 ताले एटा माइनस log of 1. log 1 होची 0 सो 0. k वैल्यू ने होची 2. 2 हेले कोन हो माइनस log 2. log 2 रो वैल्यू होची 0.30 माइनस 0.3010. सिमिलरली मु बे 3 नोची ताले माइनस log रो वैल्यू 3 नेबी. माइनस log 3 माने माइनस 0.477. मु आउ टिके बढ़ेली तो एटा हो माइनस log 4. log 4 हेबो केते ना माइनस 0.6020. 5 नेली तो एटा हो माइनस log 5. माइनस log 5 रो वैल्यू केते माइनस log 5 रो वैल्यू होची 0.699 बा माइनस 0.699 बा माइनस 0.7. सो log 5 रो वैल्यू जेतेबेले 1 नै जाउची एटा कोन जो माइनस log 1. माइनस log 1 इज इक्वल टू केते हला माइनस 1. ताले मते बर्तन को पीके एपटे लेफ्ट साइड रे बढ़िला किंतु पीके रो वैल्यू कोन हे गेला 0 रु कमी कमी माइनस 1 हो गेला ना. सो पीके वैल्यू डिक्रीजेस. बुझा पड़ला. के वैल्यू बढ़िले पीके वैल्यू डिक्रीज हबो. बुझा पड़ला ना बुझा पड़िला नाही. के वैल्यू बढ़िले पीके रो वैल्यू कमीबो. इज इट क्लियर टू एवरीवन. K more the K less will be pk. More the K less will be pk. pk pka. pk मुझे देखी थिबो सेही pk ए एइडा नुह. So it is pka. Similarly more the kb less will be your pkb. Similar fashion रे हबो.
मन रख जार के जिते अधिका तार एसिडिक स्ट्रेंथ सेते अधिका राइट log 1 0 log 1 होची 0 log 10 होची 1 ताले मु आमे एठी निष्कर्ष रे कोन पाइले more the k more will be acidic strength less will be pk and more will be acidic strength and more will be acidic strength similar to kb also तो k ର value ଯେତେ ଅଧିକା ହବ ମାନେ k ମାନେ ତୁମର dissociation constant ଯେତେ ଅଧିକା ହବ acidic strength ସେତେ ଅଧିକା ହବ କାହିଁକି ଯେତେ k ଅଧିକା ହବ ସେତେ ତୁମର k ର value dissociation constant ଯେତେ ଅଧିକା ହେଲା ସେତେ ସିଏ easily dissociate ହେଇଯାଇଥିବ ତା ମାନେ similarly more the kb ଯେତେ ଅଧିକା ହବ less will be pkb and more will be basic strength basic strength हमर more हबो ठीक अछि अच्छा एतिकी ହେଲା ପରେ ଆମେ एठी कोन देखिबा कोन बुझिबा ना केबी आउ केबी अछि सो ଆମେ कहि परिबा जे बॉन्ड एनर्जी जेते अधिका हबो सेते कोन हबो पीकेबी सेते कम हबो पीकेबी सेते अधिका हबो सॉरी पीके और पीकेबी सेते अधिका हबो बॉन्ड एनर्जी जेते अधिका हबो पीकेबी सेते अधिका हबो एसिडिक स्ट्रेंथ सेते कोन हबो कम हबो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ सेते कम हबो और बेसिक स्ट्रेंथ सेते कम हबो तो मु एटा शॉर्ट फॉर्म रे लिखली more the bond energy less will be the acidic or basic strength or more will be the pk or pkb value हमर जते बॉन्ड एनर्जी अधिका हबो pk किबा pk रो वैल्यू सेते अधिका ही हबो ठीक अछि बुझे पड़ला समस्त को ना कार कोटे डाउट रहला ओके तापर हम जिबा ये गला बॉन्ड एनर्जी को डिफाइन करबा नेक्स्ट हमर थिला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेक्स्ट पॉइंट अछि हमरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वर्तमान कहार क्लास अछि कि माने कहार ऑफलाइन क्लास अछि कि के किंतु जदि एसिडिक स्ट्रेंथ कमुची के रो वैल्यू कमिबो अखिल एसिडिक स्ट्रेंथ कमिबो बुझा पड़ला ई कांसेप्ट आसना खाली पचारिबी पुनी अखिल पचारले के वैल्यू कमिबो कि बढ़िबो के वैल्यू के डिक्रीज हेले पीके इंक्रीज हबो यस अखिल के वैल्यू डिक्रीज हेले पीके वैल्यू इंक्रीज हबो अखिल सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमें वर्तमान देखिबा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नहीं डिस्कस करबा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को नहीं डिस्कस करबा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माने हमें जानिचे जे द पावर टू अट्रैक्ट द लोन पेयर ऑफ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ सेटा कहबा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी माने द पावर टू give or donate the bonded pair of electrons towards another atom is known as electropositivity electronegativity रो उल्टाटा सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर मु केवल एति केवल कहि देबी देखो गोटे एग्जांपल रे HF HCl HBr HI एगुटा को जदि हम देखिबा कोडा जल्दी आयन रे कन्वर्ट हबो इट इज somehow related to your bond energy कोडा जल्दी आयन रे कन्वर्ट हबो
obviously I माइनस टा कहीं I रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबुठ कम तो जेते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हबो जेते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हबो से अनुसार से पोलारिटी हबो एटा बहुत बड़ साइज रे सो ए कांसेप्ट पर बुझेबी एठी जदि हम देखिबा एचएफ ठीक अछि एचएफ ए सब कांसेप्ट को जदि हम बुझेबी एचएफ H2O NH3CH4 एचएफ H2O NH3CH4 तमाने पढिथिबो गोटे ये कोन सेडा पोलारिटी सबड अधिका पोलारिटी कहार अधिका सबड अधिका पोलारिटी कहार सो ग्रुप रे गोटे प्रकार हबो पीरियड रे गोटे प्रकार हबो आमे जानिछे सो सेही अनुसार आर ट्रेंड अलगा अलगा हबो आमे केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नेकी पढिबा CH4 NH3 H2O HF ए भलिया रहिछि तो जेते इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हेतिबो सेते स्ट्रांग आयन फॉर्म हबो सेते स्ट्रांग आयन फॉर्म हबो इन केस ऑफ योर सेम एटॉमिक साइज मु एटा को नेक्स्ट क्लास रे बतेबी बुझेबी कारण एबे कहार कहार क्लास भी अछि सातरा बेले क्लास को क्लोज करिवा आसना काली पुनी 6टा बेले क्लास नबा 6टा रो 6टा 5 10 भितर हेजो 6टा बेले मु ट्राई करिवि न पाए जेम देले 6टा बेले ही क्लास नबा ठीक अछि ओके थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन थैंक यू ऑल ऑफ यू